I feel I'm not bad. I'm okay. I'm decent director. किसी ने अपनी कहानी को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कॉलम में लिखा, so hats off to her for her courage. हम जब बोले तो हमें सोचना ना पड़े कि हमें कश्मीरी बोल रहे हैं। Oh ho. I'm in love. I'm in love with Raat Rani. कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। Bombay is a city of migrants. Yes. Right? People come from all over India to Bombay. लव और एक्टिंग हो तो अच्छा, करो तो बेकार। मैं इसके अंदर आग लगा दूंगा, ऑडियंस विल लव इट। कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रोसेस के अंदर आप सोचते नहीं हो, आपको वो कहानी बहुत कुछ देके जाती है। मैं रो दिया था। She kept Why going did you on do the film? because I said. Why did you say yes to this film? Be honest. And that is why he's fabulous. That's what he's going on saying. Hi, I'm Bhupendra jadawat. Hi, I'm Shonali Bose. I am Nilesh Maniyar. And you're watching us on Tele Chakkar. Well, प्यार की कोई ऐसी particular definition नहीं होती है, but then what better than actually getting to have a different bunch of definitions by the creators and the actors itself. And you know, modern love, what better to treat actually, you know, जहाँ पे एक कहानी नहीं, इतनी सारी कहानियाँ देखने को मिले, and आप लोगों की कहानी is like, you know, I read the little brief about it and I'm like, oh, it is so relatable to me because I am a Kashmiri. Firstly, welcome on Tele Chakkar. It's a pleasure having the three of you. Let's start with the director itself, asking कि मैम कैसा था struggle, you know, working प्यार की एक definition दिखाना and then, you know, showing it in the beautifulest way possible and you know now just waiting for that feedback. अच्छा fans क्या कहेंगे वो वाला कैसा है अंदर से feeling? ये फिल्म के लिए ना least nervousness, most excitement. Usually any other films I've always felt like क्या कहेंगे, but I'm so in love with this. एक तो मुझे इतना प्यारी स्क्रिप्ट मिला, नीलेश ने कहानी, कैरेक्टर सब कुछ क्रिएट किया and the script. So I got such an amazing script really कि I would have to be a very, very bad director, Vishakha, to mess up that script. And I feel I'm not bad. I'm okay. I'm decent director. So actually, I can't take the credit. I had such an amazing script and then just gifted actors. Just a joy for a director. So it was just a joyous experience all around. My editor, my sound designer, Rasul Pukuti, my music composer, Ram Sampath, the song Raat Rani, oh ho ho. I'm in love. I'm in love with Raat Rani. I'm very excited. We don't need the audience to get smitten with this, you know, the concept. We have the director itself. I'm smitten and I'm so excited. I can't wait. How many hours are left? How many hours are left for the world to see Raat Rani? What task was it actually? You know, the way she's describing it seemed that it was quite the joyful ride. But then what about you? It was challenging, joyful, but most importantly, I think it was a very introspective one. You know, because जब ब्लॉग मिलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्लॉग है, किसी ने अपनी कहानी को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कॉलम में लिखा, so hats off to her for her courage to express herself. And then the idea of adapting a New York story into Bombay, you know, पहले लगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बॉम्बे की कहानी बॉम्बे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, पर थोड़ा सोच कर लगा कि यार it's very interesting कि a love story you can take from anywhere and place anywhere and can it still have the same feeling. So that was an interesting journey, and when I took that journey, I think the result that we have got, thanks to these people, is very rewarding. I'm so happy with the film. Well, I would say ये तो एग्जाम का पेपर था, लेकिन फिलहाल तो एग्जाम लिखा हमारे एक्टर ने है. What about you? How difficult was the exam for you? Like, was it as easy and as smooth ride as these two are telling, or you had to see the troubles? हाँ, किसी भी एग्जाम की शर्त होती है कि आपकी तैयारी कैसी है. Exactly. तो जो तैयारी थी वो फिल्म शूट के करीबन 1 महीना पहले एक अच्छी खासी तैयारी शुरू हो चुकी थी. वो चाहे डायलेक्ट की बात हो, चाहे उसका जो कैरेक्टर है उसके जो नुएंसेस है उसकी बात हो. सो वी हैड संजीव कौल सर, जिन्होंने बहुत ही कश्मीर की जो बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, उससे हमको रूबरू करवाया और हम तक पहुंचाई, वो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचाई वो, ताकि हम जब बोले तो हमें सोचना ना पड़े कि हमें कश्मीरी बोल रहे हैं, यू नो, हम लगे कि हम वैसे बोल रहे हैं. वहाँ से लेके और मैम से मिलने तक एक एक छोटी छोटी चीज़ की कैरेक्टर कहीं ना ऑडियंस को ये ना लगे कि ये कोई ख़राब कैरेक्टर है. हर इंसान की एक शेर है कि मतलब बहुत ही मतलब सुना सुनाया शेर है कि कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. तो वो जो कुछ तो वजह होगी, उन वजहों के बीच में जो कैरेक्टर है, आप फिल्म में देखेंगे, वो जो क्या वजह थी उस कैरेक्टर के लिए, वो जानने के लिए, वो आपके अंदर आत्मसात होने के लिए 1 महीना काफ़ी कमाल था. जो ट्रेनिंग थी, जो तैयारी थी हमारी एग्ज़ाम के पहले की, वो इतनी मुख्तलिफ रही कि जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे थे सोचना नहीं पड़ा कि क्या लिखना है, बस हम लिख रहे थे. I like how he's using all these certain small here there Urdu words. I know that. I'm like, oh, पूरा असर पड़ा हुआ है किरदार का फिलहाल तो. But then if I may ask you, what was the most challenging part about your character? चैलेंजिंग पार्ट उसके पहले की चीज़ें थी. जब आप उसके में
उसमें धीरे धीरे डिग करते हो शुरुआत। आई थिंक कश्मीरी का डायलेक्ट था, वो शुरुआत के 3-4 दिन थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट एक बार हम फ्लो में आए तो हम फ्लो में आते गए। मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था कहीं पर भी, क्योंकि चैलेंज इनके थ्रू होते हुए आ रहा था। शायद चैलेंज इनको या इनको रहा होगा। मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही स्मूथ था। But then do we get to hear a little Kashmiri words here and there, or what is it like? So it's not really, the story is nothing to do with Kashmir Yes. in that sense. So the characters need to speak in that way because it's Bombay is a city of migrants. Yes. Right? People come from all over India to Bombay. So in that sense, Nilesh decided to choose Kashmir as a distant place from Bombay where a migrant is going to be sort of quite cut off from their community. Okay. But it could have been from Kerala. Could have been, from Bangladesh, which is not in India, but still like, Bangladeshi migrants come for that vulnerability. So I think the idea for us, what I was excited with what he did is that it's a Kashmiri character, which is not to do with the baggage of what Kashmir is. Yeah. Usually you're from Kashmir, then it's all about, many other things. Yes. Absolutely. I mean, all other stories of Kashmir are as important, but we chose to tell a story which never gets told. How you can just bring in a Kashmiri person, like, if I brought the character from MP, you wouldn't ask the question, right? Yes. So the idea is that. But I would love to know one thing, because actors काफी बार ना criticize करते हैं अपने काम को. They like, अच्छा ये किरदार अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये scene अच्छा नहीं लग रहा. But as writers, when you write and then when you see like the proper thing that comes out on that screen, do you still see and compare कि अच्छा मैंने ऐसा लिखा था, actor ने इतना This अच्छा. is a very good question, Like, Vishakha. I want to know the answer. Do you do also, that thing because he's a writer director, you see. So he would have had certain visions of how he would have shot the script. How do you feel? 2-3 things I feel. First of all, I mean, it's a track record. Like, Shonali is just amazing with her actors. Like, there is no chance that I'm going to doubt performances. I mean, what she brings out of the actors and what actors do in her films is just fantastic. But second thing that I was very worried about is that एक 35 मिनट की फिल्म के लिए ना, I had written 30-page script. तो वो था कि ये फिट हो जाएगी क्या इतनी टाइम लिमिट में, कैसे ये लोग करेंगे. तो शायद बहुत सारे कट्स होंगे, चॉप करेंगे, कॉम्प्रेस कर देंगे. बट फिल्म में इतना सुंदर ट्रीटमेंट है ना, देयर आर सम रियली लॉन्ग शॉट्स, देयर आर लॉन्ग सिंगल शॉट्स, एंड येट द फिल्म इज टोल्ड इन दोस 35-38 मिनट्स. सो as director, as her, what she did with her crew, technical crew, I was very fascinated by her take on what I had written. And finally, I feel, the emotion that she has aroused in a viewer, of whatever little viewership we've had while editing, it's way more joyous and way bigger than what was written. I would say satisfy your own mind, because if you ask me what is love, I'll still have to take another 2-3 minutes and think like, what is love? That kind of a thing. So for you, what exactly is love? कि लव और एक्टिंग एक कॉमन चीज़ है, हो तो अच्छा, करो तो बेकार. This is the first. I said there are so many definitions. This adds to it. So वो जो प्यार को होने देना होता है ना, आप प्यार के लिए खुद को सरेंडर करते हो ऑनेस्टली. आप उस प्यार को एंजॉय कर पाते हो, उसको फील कर पाते हो. मेरे लिए प्यार जो है वो रहना है उस मोमेंट में. अगर आप वहाँ हो, या तो आप नहीं हो. यू कांट फेक इट. लोग फेक होते हैं और वो चीज़ें चलती भी नहीं है, चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है. या तो नहीं है या तो है. एक्टिंग में भी या तो नहीं है या तो है. Yeah, this is a beautiful parallel because you can't fake it actually. क्या बात है? You I can't think you have fake the same acting. story. You be honest Yes, in sir. acting and honest in love. You have yet another story out here that he gave me like a little nuance, क्योंकि ऐसा कुछ कर सकते हैं. But then if I ask He's you, only tip of the iceberg right now. He's going to tell million stories in time to come. I'm hoping that way around. But then you just said about moments. According to you, जो आपने perform किया है screen पे, which particular scene you feel that the fans will be like, oh God, this is something that Bhupendra did like the great, like ये सबसे अच्छा था. सबकी अपनी एक खासियत है, सबकी अपनी एक ब्यूटी है, एक गहनता है, उसकी एक इंटेंसिटी है जो मुझे यहाँ से मिली है. वहाँ से पास होते होते यहाँ तक आई है. यहाँ से आई है. सो ये सोच के कि मैं इसके अंदर आग लगा दूंगा, ऑडियंस विल लव इट, कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रोसेस के अंदर आप सोचते नहीं हो. अगर आप वो सोचोगे तो वो बैगेज आएगा. But then does audience का feedback affect your work, or do you just read their feedback and you're like, okay, ये उनका feedback है, I will listen, see, read and move ahead? I think the most important thing, are you honest towards yourself before the audience? If you are honest towards yourself, appreciation अच्छी लगती है. Yep. कोई आपको तारीफ करेगा,
ऑटोमेटिकली इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू. लेकिन द बेसिक इज आर यू देयर, आर यू ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर वर्क. मेरे लिए ज़्यादा मैं उसके लिए कंसर्न हूँ. बट जब ऑडियंस कहती है या मैं पढ़ता हूँ कहीं पर, हालांकि मैंने बहुत कम काम किया है, पर अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा और नेक्स्ट डे मैं भूल जाऊँगा, मैं फिर से अपने काम में लग जाऊँगा. So that means you criticize your work. आई एनालाइज माई. Okay. In that regard, I would say, आपका क्या feedback था रात रानी के लिए? I'm sure perform करते करते you would have had these small pointers कि अच्छा ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ. What was your feedback about your work? कहानी इतनी ब्यूटीफुल थी कि हम सब लोग उस कहानी को सर्व कर रहे थे. जब मैंने पहली बार फिल्म को देखा, मुझे लगा कि इस लिखी हुई कहानी को इससे बेहतर नहीं कोई कर सकता. जब मैंने पहली बार देखी थी, अगर आप किसी भी कहानी को एज एन ऑडियंस देख रहे हो बिना किसी बैगेज के कि मैंने इसमें काम किया, या ये जो डायरेक्टर मेरे पास में बैठे हुए हैं, वो जो राइटर उनको मैं जानता हूँ, उनको सोचे बिना जस्ट अ स्टोरी कि आप एक ऑडियंस की तरह देखते हो, आपको वो कहानी बहुत कुछ दे के जाती है. मैं रो दिया था, मैं उसका हिस्सा हूँ कहानी का. बट जब मैंने पहली बार फिल्म को देखा था उसके कुछ वक्त पहले, आई वॉज देयर, आई वॉज वेरी. कुछ चीज़ें मुझे अपनी बुरी लगी जो मैंने शायद 4 साल पहले कहीं पर की हो. इट्स लाइक Reanalyzing your own self. हाँ. You know, when I see directors, when I see writers, and I'm like, do these people compliment other people also if they like their work? Or if they don't like their work, do they go bluntly and tell them that, okay, this was like, ये feedback type से? So I would like to know from the two of you now, जब आप अपने अलावा किसी और का काम देखते हैं, do you guys give them like a very honest, blunt feedback? I want to answer this question for Shonali. I want to answer this question for Shonali. मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ. Yeah, don't say Yeah, names. नहीं. Don't say names. Yeah, no, I won't say the names. Margarita with a Straw जब release Oh my God. होने वाली थी, तो Amir and Kiran have very graciously kept a private screening for some industry friends. तो एक एक्टर है, उनकी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई थी, तो वो आए स्क्रीनिंग पर. तो सोनाली ना, अब शी इज़ वेरी वार्म एंड शी इज़ वेरी like her energy is contagious, right? So she went is like hello, hi, hugs, पूरा एकदम प्यार से मिली तो लगता है कि कोई बहुत बिछड़े यार मिल रहे हैं ना. तो जैसे ही गले मिली ना, तो उनको पहली चीज कान में बोलती है, यार तू क्या वो बुरी फिल्म थी तेरी यार, अभी जो तूने रिलीज की, क्या मतलब. तो एकदम से रियलाइज कर रही है सोनाली और बोल रही है, नहीं एक्टिंग तुम्हारी ठीक थी, फिल्म बहुत बुरी थी. अच्छा मुझे लग रहा है कि भाई इसकी फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है. बैठ गए, मुझे लगा हो गया, ये थोड़ा सा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मुझे लगा पर नहीं, सोनाली नहीं रुकी. सोनाली इज लाइक, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो वैसे नहीं होना. वो she kept going on because she. Why did you say yes to this film? Oh God. Other directors also and their friends, or friends. So I'll be brutal. Like even, it could affect my career. I cannot not say the truth. I'll be like, yeah, I really didn't like the film. And did you give your actors the honest feedback when you saw the final product? You have to be completely honest with your actors, but it's not of the. You can't give on the final product, right? With actors, what do you do when the film is finished? It's in the process, right? But it's never a situation like that, because our process is deep, so deep with my actors that for the 1 month that he's saying that we worked, but I didn't have to ever criticize them. As he's saying, our work is, when the work is honest, all you can do is really guide your actors that you miss that moment. This is how you have a discussion on what is the moment. You want them to be honest. That is what I require from them. We don't make films as actors or directors that the audience will give honest feedback and then we are going to look and analyze and say, some critic said that. Were we honest, and do we love our own work? Do we stand by it? That is what matters for us. Guys, thank you for joining me here on Telly Chakkar. Any parting words for the fans? Because I'm sure they're as eager as you guys are. May 13th, guys. Don't miss it. That's the only Love word. Mumbai. Well, that was the cast of Raat Rani, and I really hope that you guys will love watching it on May 13th, because ये लोग paper लिख चुके हैं, results तो I think 13 तारीख को ही out होंगे. But this is me, Vishakha Pandit, signing off for now from Telly Chakkar, and also stay tuned. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.